Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video we are going to discuss section 58 of Indian Evidence Act. In our previous video हमने section 57 के बारे में और 56 के बारे में बात करी थी, जहां पर हमने ये बताया था कि facts, अगर कोई facts का जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले लेता है तो उन facts को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में सेक्शन 58 ये बोलता है कि ऑल दोस फैक्ट्स व्हिच आर एडमिटेड देन दे आर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब सपोज एक ये सेक्शन बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट सेक्शन है, जहां पर इतनी सी बात बोली गई है कि अगर मैं स्वीकार कर लेता हूं कि मैंने क्राइम किया तो अब किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने एडमिट कर लिया। एज सिंपल एज दैट। इफ अ सर्टेन फैक्ट इज एडमिटेड देन दैट फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो ये इस सेक्शन की जनरल अंडरस्टैंडिंग है। नाउ this section basically talks about that no fact need to be proved if the parties or the agents admit to the fact during the hearing. पहला पॉइंट है, पार्टीज या उनके एजेंट्स ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ हियरिंग वो अगर एडमिट कर लेते हैं तो उस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इज, और बाय वे ऑफ हियरिंग और बिफोर हियरिंग दे अग्री टू एडमिट इन हैंडराइटिंग। ठीक है, हियरिंग के पहले वो अग्री कर लेते हैं कि दे वुड अग्री बाय वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो वो in that case also they are admitting before the hearing, they agree by way of handwriting to admit the fact, then in that case that fact need not be proved and that is also covered. Now coming on to third point, that is कि if any rule of law in force owns that if any कोई law जो in force है वो deem करता है of as to any party that the party has admitted to any fact during their pleadings। अगर कोई law which is in force ये डीम करता है कि सपोज प्लीडिंग्स जब चल रही थी, उस प्लीडिंग्स के समय में पार्टी ने जो स्टेटमेंट्स दिए दैट वुड अमाउंट टू एज बीइंग एडमिशन, तो उस केस में वो फिर दोस फैक्ट्स आर एडमिटेड, सो दोस फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो तीन सिचुएशंस हैं जहां पर फैक्ट इज कंसीडर्ड एज एडमिटेड एंड देन वंस द फैक्ट इज एडमिटेड दैट फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। सबसे पहला है कि व्हेन द पार्टीज और एजेंट्स देमसेल्फ एडमिट ड्यूरिंग द हियरिंग। दूसरा है कि व्हेन दे अग्री टू एडमिट in handwriting before the hearing। तीसरा है कि when any rule of law deems the party to admit while during the pleadings। ठीक है, तो in all these cases it is considered that the fact is admitted and when the fact is admitted that fact need not be proved। but again ये था इसका जनरल रूल। now coming on to the exception of this section, ये बताता है कि जनरल रूल में बोला कि अगर फैक्ट एडमिट कर लिया तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है उसको, बट कोर्ट बोलता है इस सेक्शन का एक्सेप्शन ये बताता है कि कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू आस्क टू प्रूव द फैक्ट व्हिच इज एडमिटेड। अगर पार्टी ने एडमिट कर लिया या फिर एनी लॉ एंड फोर्स डीम्स एनी पार्टी टू एडमिट, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लीडिंग्स, उन तीन सिचुएशंस में किसी में भी फॉल हो रहा है और फैक्ट अगर एडमिट हो गया, इन दैट केस आल्सो कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू आस्क द पार्टी टू प्रूव द फैक्ट even after admission। so that is an exception to this section। that means court, the ultimate discretion is of the court may even ask the party who has admitted to prove the fact again। so that was all about section 58। now we'll talk about section 59 and onwards, and section 59 and 60 बात करते हैं oral evidence के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। till the time, bye bye and take care। अगर आपको वीडियो पसंद आई then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for regular updates। thank you।